So I'm currently a student at University of Chester in England, and the idea for this particular car came from like years back when I was in my high school, and it was not about just creating a car or just making something different. I was looking at many different ideas and I was always in love with cars. So मैंने सोचा कि even if I try to make कोई नई गाड़ी अगर मैं बनाने की कोशिश करूँ, then there is too much competition in, and then there is another problem that junkyard and all, there are junkyard की गाड़ी all over the world, which is a problem. पूरी दुनिया में junkyard की गाड़ी हर जगह होती हैं. So if we can make something new, something innovative from the junkyard waste, that thing can be used in public places like airport station for people, for users during their travel. So ये जो गाड़ी है, this particular गाड़ी, this is just a prototype during the summer vacations here, and during the period of 3 months ये गाड़ी तैयार की गई. इस गाड़ी को हमने बनाया गया, पूरा स्क्रैच से बनाया गया था. इसका हमने इंजन, सीट्स वगैरह सब कुछ निकाल के सब कुछ इसको हमने कन्वर्ट किया 12 आवर्स. सो दिस आइडिया इज पर्टिकुलरली ये ध्यान में रख के किया गया है कि बजट ट्रैवलर्स के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाया जाए, क्योंकि जो फर्स्ट क्लास एंड बिजनेस क्लास पैसेंजर होते हैं उनके लिए लाउंजेस और कई तरह की फैसिलिटीज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन जो बजट ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं होती है. सो दैट्स जस्ट हाउ दिस आइडिया केम फ्रॉम एंड हाउ इट स्टार्टेड विद इट. So before this car started to get constructed, इससे पहले करीब 1 साल तक की मैं अपनी रिसर्च मान सकता हूँ, जो मैंने कम से कम 1 साल तक मैं इस गाड़ी पे काम कर रहा था. इससे पहले कि ये गाड़ी बननी शुरू होती, कि हम वर्कशॉप में जाके स्टार्ट करते बनाना, काफ़ी चीज़ें मेरे को कंसिडर करनी पड़ी कि कैसे बनाई जाएगी. सुनने में बड़ा आसान लगता है कि हमें बस गाड़ी का इंजन, सीट्स निकाल के बस नाउ दैट्स रेडी, बट इसके अलावा भी इसमें काफ़ी कुछ काम है. जैसे कि इंजन अगर निकाला जाता है तो फिर गाड़ी के पहिए फैल जाते हैं, तो हम उस चीज़ को कैसे मेंटेन करते हैं. तो हमें एक तरीके से एक शेल के अंदर फ्रेम दूसरा बनाना पड़ा, और फिर लाइट्स, अगर गाड़ी का एसी नहीं चल सकता बिना इंजन के, और अगर ये इसके अंदर कोई इंसान रुकता है तो हमें एयर कंडीशन लाइट्स वगैरह भी चाहिए. तो उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसे रिसर्च करनी पड़ी कि हम लाइट्स वगैरह कैसे फंक्शन करेंगे. एंड सिंस वी डोंट हैव द इंजन, we have to transport this car from one place to another. तो उसको कैसे किया जाएगा. So the 3 specialties of this car is entertainment, comfort and privacy. So this is, you can think if you book this thing, it's your private room. It's kind of a hotel inside a terminal, inside an airport, inside a parking, anywhere. It's your private room. I cannot say right now when it's gonna come in the market, but personally I set a timeline. I want this thing to be in market before 2020. It was not about just creating a car or just making something different in car. It's not about any brand, it's not about any design. I was just very passionate about cars. I don't see cars as just something physical or as a mode of transportation. I see them as a mode of an art.